Hi everybody, I'm Prateek Dua from Prateek Dua Photography and I'm back with another video. Today we are going to take interview of a very special guest. She is an excellent, wait for it, you guessed it right, she's a belly dancer. Not only is she just a performer, but she's also an instructor at Twitchcraft. In order to take her interview, we are going to GP Pro camera store and I'll tell you more about that when we reach there. First of all, I would like to thank GP Pro Camera Store for allowing us to use the studio upstairs for the interview. And right now, I'm in the main store, which is basically a heaven for me. I feel like a kid lost in the candy store. Of course, candy is a lot cheaper and cameras aren't. But GP Pro Camera Stores offers great discount. They have huge stock of cameras and something which really surprises me is that they're never out of stock. They have huge inventory. They have cameras from all the major leading brands from Canon, Nikon, Sony, Lumix, Panasonic, GoPros and whatnot. They have excellent accessories and flashes. There's a lot of variety of sound equipments as well. They have a lot of camera bags over here as per your need and requirements. You have a lot of camera lights and equipments. You've got monopods and tripods. They have excellent variety of lighting equipments also. They have gimbals also. भैया इतना प्रमोशन में ये गिम्बल तो गिफ्ट कर ही दो नहीं वापस रख दो मूविंग ऑन they have got a lot of vintage camera equipments also which you don't find easily. And now let's start the exciting interview. अच्छा लग रहा है क्या मेरा प्रोफाइल सही लग रहा है? Hi Nidhi, how are you? Hi Prateek, I'm good. How are you? Very well. So Nidhi, my first question for you is what क्या था? यार मुझे ना ये BTS देख रहे हैं बाद में. So Nidhi, my first question for you is what form of dance do you exactly do and what does it represent to you? Thanks for the question, Prateek. I do belly dancing, and belly dance for me is equal to liberation, if I may Okay. say so. Like जब से मैंने सीखना शुरू किया, it has been like I've been in connect with my body, Okay. and then also like ज़्यादा लोगों की ऐसे परवाह नहीं होती है what people think. There were times जब I have been very conscious about my body, but ever since I've started learning belly dancing, I think it's been like liberation for me. I have been in touch, constant touch with my body and like with myself. Right. So right. काफी grounded रखता है मुझे belly So dancing. it basically liberates you a Yeah. lot. Okay. So Nidhi, considering how conservative our society is, how do you think belly dance is perceived? Yeah, like हम 2022 में आ गए, but I still feel like there are like a lot of prejudices and taboos that are related to belly dancing, Yeah. and like not just with like one gender, like not just with women who are into belly dancing, but also like male belly dancers. Yeah. So I think दोनों का struggle is very different, but at the same time like same also. In the sense कि like for women it's like ऐसे कपड़े क्यों पहन के कर रहे हैं, अपना शरीर दिखा के belly dance क्यों कर रहे हैं, and then this constant comparison of belly dancing with like other forms of dance, especially classical dance जहाँ पे your body is covered. तो एक तो definitely वो stereotype है. Okay. Other than that is like you have to be like ये एक stereotype है जो बना दिया है कि you have to be in like a particular shape for belly dancing, which is not Right. true. Okay. We have like all shapes and sizes of belly dance. Previously, we were just discussing Yeah, about it. yeah. Yeah. So Like you were also belly dance, ठीक है. So that is there. I think with male belly dancers, it's also like कि अपना feminine side क्यों दिखा रहे हैं. Being a Right. purush or being a man, Yeah. why do you have to show like your feminine side, or why do you have to like even like explore your feminine side? So I think Yeah. that is one of the struggles that most of the male belly dancers like face हमारी society में. Right. कि लड़का होके ऐसे dance क्यों कर रहा है? But one thing which I also seen Nidhi is, I mean, a lot of part of your body is even visible if you wear a sari. Yeah. So that is fine. That is not considered as a taboo. But जब belly dancer बनते हैं, when that same belly is visible, then it becomes a taboo. That's very hypocritical of our society. Yeah, मतलब अब like I don't know if it would be controversial, but like थोड़ा hypocrisy है, because like when a woman is wearing a sari, it's because हम उस संस्कार वाली चीज में आ जाते हैं. Right, right. ठीक है, क्योंकि I am now abiding by the rules that have been created by the society for me. But Right. at the same time, if tomorrow you wear a sari and you go out, you will be given like all those looks. तो क्रॉस ड्रेसिंग का जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है, लोग Right. अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए. Like
हमारे फैशन डिजाइनर्स है, इफ यू गो टू लाइक यूनिवर्सिटीज में लोग हैं, लाइक आई हैव अ प्रोफेसर हु हैज अ मेक बॉडी बट लाइक वेयर साड़ीज एंड लाइक ही डॉन्स द सॉरी साड़ीज लाइक बहुत अच्छे से, मैं भी उतने अच्छे से अच्छा। कैरी नहीं कर पाती हूँ। हाँ, ओह वाओ। तो अभी क्रॉस ड्रेसिंग का भी एक चीज है जो लोग नहीं समझ पाते, सो आई थिंक वो स्टीरियोटाइप्स तो कहीं ना कहीं हमेशा रहेंगे। माई ओनली थिंग इज कि क्या कहते हैं, हम इसको चैलेंज कैसे कर रहे हैं, एंड Right. दिस इज हाउ वी आर डूइंग, राइट? But do you think has society changed a bit from the time when you initially started, or from the time when you started learning it? Have you seen there's a trend that is changing? Yeah, see, so I started learning belly dancing, it was in 2018. तो Okay. तब तक ऑलरेडी जो हमारे जो फॉर्मर बेली डांसर्स है उन्होंने एक आई थिंक एक चेंज स्टार्ट कर दिया था। Right. तब से लेके अभी तक डेफिनेटली देयर हैज बीन अ शिफ्ट इन Okay. टर्म्स ऑफ लाइक द माइंडसेट। That's good. मैंने वो अपने घर पे भी देखा है, लाइक इवन Okay. विद माय पेरेंट्स आई हैव सीन लाइक I एक wanted to ask you the same thing also. Ki like when you told your parents that you want to do this belly dancing, were there any apprehensions from their side? सो आई डोंट नो इफ इट विल कम एज अ सरप्राइज, बट मैंने घर पे बताया नहीं था कि मैं बेली डांस सीख रही हूँ फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। अच्छा. दे जस्ट न्यू कि मैं कुछ तो डांस फॉर्म सीख रही हूँ। But you were dancing like from since childhood, I think you were into हाँ, मतलब dancing. आई वाज इनटू डांस, बट देन फिर वही वो 10वीं के बाद तीन कंधों पे साल भार तीन हो साल जाता पढ़ाई है, कर लो फिर पढ़ाई लाइफ सेट कर है. लो। हाँ, लाइफ कभी सेट नहीं होती है, लाइफ कभी सेट नहीं होती नहीं है। होती है. सीरियसली लाइफ कभी भी सेट नहीं हाँ, होती. हाँ, मेरी तो अभी तक नहीं हुई है, बट ठीक है। नहीं, आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू दैट स्ट्रगल. हाँ, सो आई थिंक 10th के बाद वो सब छूट गया था, एंड Okay. देन आई स्टार्टेड डूइंग लाइक माय फर्स्ट जॉब वाज इन 2018, दैट इज व्हेन आई वाज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, लाइक घर Okay. वालों से कुछ पैसा वैसा नहीं तो लेते थे। what kind of job were you in? I am a social worker. अच्छा. So 2018 में I May I ask you in what field social working you were doing? हाँ, क्यों नहीं? So my background is gender studies. I've studied अच्छा. gender studies. Okay. तो उसी से related like what I was doing was कि I was working with Manas Foundation. अच्छा. It's a mental health organization, but it Okay. also works on gender sensitivity with commercial vehicle drivers. So I अच्छा. used to work as a trainer there. Okay. तो मतलब मैं उसको प्रमोशन नहीं कर रही, बट I used to work as a trainer there. तो वहाँ पे मैंने एक्चुअली सोशल वर्क की प्रमोशन करनी चाहिए. नहीं मतलब हाँ ठीक है। सो लाइक आई हैव बीन वेरी लकी इन टर्म्स ऑफ दैट, क्योंकि घर वालों को पता नहीं था कि मैं सीख रही हूँ, ओके. बट माय बॉस देयर न्यू, बिकॉज Okay. मैंने उनको पूछा था। आई यूज्ड टू ट्रैवल टू गुड़गांव डेली, ओह. तो वहां से शाहपुर जाट क्लासेस के लिए आना वाज लाइक थोड़ा डिफिकल्ट, Yeah. सो आई हैड टू लाइक लीव अर्ली सो आई कैन रीच द क्लासेस ऑन टाइम। सो आई हैड स्पोकन विद मैम एंड लाइक मोनिका मैम उनका नाम था है। मैम ने लाइक शी अंडरस्टूड एंड शी वाज लाइक हाँ हाँ करो। इवन लाइक माय कॉलीग्स देयर, जो मेरे गुड़गांव के सेंटर वाले जो साथी थे, दे आल्सो लाइक सपोर्टेड मी, सो Okay. दैट वाज आई हैव बीन लकी। माय फर्स्ट परफॉर्मेंस आई थिंक वाज इन 2020, दैट इज व्हेन लाइक उससे थोड़ा कुछ महीने पहले आई टोल्ड माय पेरेंट्स दैट आई एम लर्निंग बेली डांसिंग, Okay. तो मेरा शो है एंड आई वांट यू टू बी देयर। Okay. सो माय पेरेंट्स वर देयर, आई थिंक माय सिस्टर वाज आल्सो देयर। Okay. तो हाँ, लाइक कुछ फ्रेंड्स जो सपोर्ट करते थे वो भी आए थे। सो दैट इज द So जर्नी। what was their reaction when they saw you on stage performing a belly dance? मतलब मुझे देख के तो शायद ज़्यादा शॉक में नहीं होंगे, बट लाइक जब मेरे टीचर्स वगैरह कर रहे थे उनको देख के डेफिनेटली शॉक में होंगे। Okay. बट आई थिंक व्हेन मेहर वाज प्रेग्नेंट दैट टाइम, Yeah. मेहर परफॉर्म्ड उस टाइम पे, मेहर मलिक अच्छा. जो है। Yeah. Yeah. एंड व्हेन माय मदर सॉ मेहर, माय मदर वाज लाइक हाउ इज शी डांसिंग विद दैट ह्यूज लाइक बेली, बिकॉज़ Okay. आई Yeah. थिंक Yeah. उनका डिलीवरी होने वाला था उस टाइम अच्छा. पे, एंड स्टिल शी परफॉर्म्ड। एंड लाइक Wow. दीज आर लाइक आल्सो मिसाल्स फॉर अस कि Yeah. नो मैटर लाइक आप किसी भी स्टेज पे हो लाइफ के, Yeah, आप you कर can सकते कर हो। सकते हैं. Right. Right. तो हाँ, तो माय मदर वाज लाइक And थोड़ा she's सा। very sweet also. I spoke to her हाँ, मेहर once. इज वेरी स्वीट एंड एन अमेजिंग टीचर। Yeah. तो उसके बाद आई थिंक थोड़ा नॉर्मल हो गया था। अब इतना नॉर्मल हो गया दैट बोथ माय पेरेंट्स, लाइक जब मैं क्लासेस कंडक्ट कर रही होती है, जब मैं खुद भी कुछ रिकॉर्ड कर रही होती हूँ एंड दे कम इन माय रूम, माय मदर ट्राइज टू डू लाइक थोड़ा शिमी वाले मूवमेंट्स, एंड देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन माय स्टूडेंट्स और माय टीचर्स जो ऑनलाइन आर कनेक्टेड है, दे आर लाइक लाफिंग एंड दे आर लाइक सो क्यूट, सो लाइक शी आल्सो ट्राइज टू डू स्टेप्स, एंड कभी अच्छा. कभी मुझसे पूछती भी कि ये कैसे करती है, मुझसे नहीं हो रहा है। सो आई थिंक लाइक उन्होंने थोड़ा नॉर्मल कर दिया है घर पे। सो Okay. हाँ, Yeah. So Nidhi, like all forms of dance are considered as cardio. So is belly dancing also a good form of exercise? डेफिनेटली इट इज, मतलब इतना स्ट्रेंथ चाहता है, स्पेशली लाइक योर कोर मसल्स एंड ऑल लाइक इंक्लूडेड उसमें, एंड देयर आर लाइक डिफरेंट डांस टेक्निक्स व्हिच आर पर्टिकुलरली लाइक तुम्हारे पेल्विक एरिया के लिए, लाइक योर लोअर बॉडी पार्ट, Yeah. एब्डोमिनल पार्ट, Yeah. एब्डोमिनल मसल्स उसमें इंक्लूड होते हैं। वी हैव अंडुलेशंस जहाँ पे आपने देखा होगा वो बेली रोल करते हुए जा रहा है। कैसे करते हैं मतलब how do you do this ये मतलब मतलब as techniques since होती you're a teacher also at witchcraft and I would ask you to tell the more about that later also Yeah. but how do you do it? मतलब परंपरा
प्रतिष्ठा, अनुशासन, आई मीन यू हैव टू बी लाइक यू हैव टू नो द टेक्निक्स। तो हम जब स्टूडेंट्स को सिखाते भी है, हम उनको वो टेक्निक का ब्रेक डाउन देते हैं कि कौन से टेक्निक में या कौन से स्टेप में कौन सा बॉडी पार्ट या कौन सी मसल इंक्लूड हो रही है, ओके। जहाँ पे वो इन्वॉल्व हो रही है। एंड लाइक एज अ स्टूडेंट इफ यू गॉटन इट तो इट बिकम्स ईजियर। तो अच्छा। अंडुलेशन में भी ऐसे होता है, जब आप अंडुलेशंस कर रहे हो, वी टेल देम कि चेस्ट का मूवमेंट कहाँ पर आ रहा है, फिर रिब्स का मूवमेंट कहाँ पर आ रहा है, फिर लोअर एब्डोमेन का मूवमेंट कहाँ पर आ रहा है, एंड दैट इज हाउ दे लर्न। आई थिंक कोई भी चीज लाइक इतना इजीली नहीं होता ना। आप Right, भी right. लाइक यू आल्सो डू फोटोग्राफी, Yeah. सो जब आपने शुरू भी किया होगा, बहुत सारी मतलब बेकार फोटोज खींचोगे, बट नाउ वी आर लाइक आज भी डूइंग होता गुड। हाँ, तो वो तो रहेगा ही ना। तो आई थिंक वी ब्रेक डाउन द टेक्निक्स फॉर आवर स्टूडेंट्स, एंड Okay. दैट इज हाउ दे लर्न। Okay. Coming back to what you asked about Yeah. belly dance being a good form of cardio, definitely it is, because uh, different techniques, different steps आपके अलग अलग body parts पे focus करते हैं. Like for example, we have shimmy. आपने देखा होगा कि बहुत बारी belly vibrate कर रहा है Right, dancers right, का. right, right. That is like a very good form of cardio अगर आपको अपना belly fat reduce करना है, like अगर sides reduce करने हैं. Okay. You can do that. Like मुझे देख के क्यों बोल रहे हो? मेरे सामने आप ही बैठे हो, मतलब ठीक है, but आप कर सकते हो ऐसे. Okay. ठीक Yeah. है, सो लाइक देयर इज लाइक ट्विस्ट शिमी एक होता है, Okay. तो ट्विस्ट शिमी अगर आप कर रहे हो, रोज भी कर रहे हो 10-15 मिनट, इट विल लाइक हेल्प यू। Okay. और एनीवे लाइक कोई भी डांस फॉर्म है, उसके लिए यू हैव टू लाइक डू अ वार्म अप, राइट? Okay. आप डायरेक्टली लाइक यू कांट गेट इनटू डांसिंग बिकॉज़ अदरवाइज यू विल लाइक एंड अप इंजरिंग योरसेल्फ, Right. है ना? यू वार्म अप, यू डू द फोकस ऑन द टेक्निक्स एंड देन यू कूल डाउन, वो पूरा कार्डियो हो ही जाता है। Nidhi, so what do you think is the future of this industry as per the trend? अच्छा फ्यूचर है, Hmm? अच्छा फ्यूचर है। मतलब आप देख रहे हो अभी बॉलीवुड में भी जा रहा है, बट आई थिंक लाइक मतलब आई एम दैट पर्सन जिसको ज्यादा लाइक वो कमर्शियलाइज करने वाला पार्ट पसंद नहीं है। इवन दो आई लाइक लव डांसिंग, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे अंडरग्राउंड डांसर्स हैं जिनको उस तरीके का रिकॉग्निशन नहीं मिला है Right. कंपेयर टू पीपल लाइक यू नो गॉटन दैट प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो करके आ रहे हैं। तो Okay. आई लाइक रियली वांट लाइक एज अ डांस फॉर्म, एज एन आर्ट फॉर्म, बेली डांस थोड़ा और वाइड स्प्रेड हो जाए और लाइक ज्यादा Accept हो लोग जाए society में. एक्सेप्ट भी हो जाए, लाइक स्टीरियोटाइप्स तभी ब्रेक भी हो पाएंगे, Right, जैसे हम right. शुरुआत में बात भी कर रहे थे। एंड देन लाइक मोर पीपल गेट द अपॉर्चुनिटी। व्हाई आई एम सेइंग दिस And I think even guys should also get this opportunity because I think a lot of time बहुत सारे जो boys होते हैं वो hesitant होते हैं because of the society and probably the pressure of the parents and all, वो कर नहीं पाते हैं. शायद वो भी थोड़ा आगे आ पाए इसको प्रैक्टिस करने. हाँ, मतलब देखो एग्जांपल्स बहुत सारे हमारे पास। वी हैव ईशान हिलाल, जो इज लाइक आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट मेल बेली डांसर्स ऑफ इंडिया। Okay. एंड देन वी हैव राहुल who runs their own क्या कहते हैं बेली डांस स्कूल Right. गुड़गांव में। एंड देयर आर लाइक अदर आर्टिस्ट आल्सो हु आई नो लाइक पर्सनली। ठीक है, Okay. तो मेरा बस ये है कि लाइक फ्यूचर ऐसा हो कि जरूरी नहीं कि मूवीज में ही दिखना है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म्स में जा रहे हो, यू शुड गेट दैट एक्सेप्टेंस लाइक यू वर सेइंग, एंड आल्सो दैट थोड़ा एक्नॉलेजमेंट कि यार इट्स एन आर्ट फॉर्म। Right. क्योंकि जब भी हम बेली डांस की बात करते हैं, लाइक दिस इज लाइक मेरे साथ बहुत बारी ऐसे होता भी है कि यू नो लाइक व्हेन पीपल लाइक डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आस्क मी अबाउट द फॉर्म, उनके सवाल ऐसे होते हैं कि थोड़ा सेंसुअलिटी पे चले जाते हैं। ठीक है, सो इट्स आल्सो एन आर्ट फॉर्म। तो आई जस्ट वांट लाइक वो सेंसुअल पार्ट भी रहता है, बट लाइक थोड़ा उससे अलग सोच के हम कुछ कर पाए, बिकॉज अभी आर्टिस्ट बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। लाइक जैसे हम फ्यूजन की बात भी कर रहे थे थोड़ी देर Right. पहले, इस तरीके से फ्यूज कर रहे हैं कि हम इट इज बिकम लाइक अ बॉडी मूवमेंट ऑल्सो नाउ। ठीक है, कि आप अपनी बॉडी को किस तरीके से मूव कर रहे हो, इंक्लूडिंग लाइक जितनी भी डांस फॉर्म्स आपने सीखे हैं, Right. राइट? तो आई थिंक वो एक तरीके का फ्यूचर है विच आई वांट टू सी, एंड लाइक यू वर सेइंग कि सबको वो चांस मिल पाए। क्योंकि आई नो लाइक पर्सनली आई हैव फ्रेंड्स, आई नो पीपल जो मुझे मैसेज करते हैं एंड दे फील इंस्पायर्ड, बट देन द सैड पार्ट इज दे आर नॉट एबल टू डू इट, क्योंकि घर से शायद उस तरीके वही अब्बू नहीं मानेंगे टाइप्स क्योंकि घर से वो सपोर्ट नहीं मिलेगा, राइट? Right. तो वो एक चीज है जो आई फील लाइक दैट शुड बी द फ्यूचर ऑफ दिस आर्ट फॉर्म, एंड लाइक फॉर एनी अदर आर्ट फॉर्म आल्सो। Right. Nidhi, has there been any person in your life, be it friend or family, who tried to talk you out of it or discouraged you? हाँ, मतलब टॉक मी आउट ऑफ इट तो नहीं, बट लाइक डेफिनेटली डिस्करेज्ड, एंड इट्स मोस्टली बिकॉज वो ही ना एक जो वो धारणा बना दी है दिमाग में कि बेली डांसर्स है तो लाइक बहुत लीन बॉडी होना चाहिए ऐसे। तो आई थिंक आई हैव बीन बॉडी शेम्ड, एंड लाइक देयर इज Okay. दिस वन पर्सन दैट आई नो, आई विल नॉट नेम, दे लाइक मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड दे लाइक आप किस तरीके का कंटेंट बना रहे हो, डजंट लुक नाइस। आई रिमेंबर एक बारी आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, और मैंने एक कुमाऊनी गाने पे बेली डांस का वीडियो बनाया अच्छा था। अच्छा. उस पे लोगों ने ऐसे मैसेज किए थे कि दीदी कपड़े तो पहन लेते, एंड आई एम लाइक कि Oh क्या। God. सो देयर आर पीपल लाइक हु डिस्करेज यू, बट आई थिंक लाइक बीइंग अ डांसर आई नॉर्मली डोंट केयर, You have, बट हाँ, you कभी have- कभार बुरा लगता है। Right. नहीं लगता है कई बार हाँ, लगता है. एंड आई थिंक सबको बुरा लगता है। हाँ हाँ. तो वही जो हम चेंज की बात कर रहे थे वो ऐसे आएगा जब हम अपनी वो मेंटालिटी में डाल पाएंगे कि
like it's not about the accepted. clothes I'm It's not wearing. about the clothes, it's about the हाँ, art form. it's about the art form. तो Right. ऐसे लोग हैं but like हम ignore कर देते हैं, Right. कभी करना कभार भी सुना चाहिए। भी देते नहीं नहीं अच्छी बात है, सुनाना भी चाहिए। What advice would you like to give to both boys and girls who want to learn belly dancing? And कुछ age criteria होता है इसमें? नहीं, तो देयर इज नो एज क्राइटेरिया लाइक आई Okay. सेड, कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, कोई बॉडी क्राइटेरिया नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया कोई भी सीख सकता है, आप भी सीख सकते हो, मैं आपको सिखा भी सकती हूँ अभी थोड़े बहुत स्टेप्स, ठीक है, कोई भी सीख सकता है। एंड देयर आर एक्चुअली लाइक छोटे छोटे बच्चे जो बेली डांस कर रहे हैं, लाइक आई हैव Okay. सीन वीडियोज, ओके, Okay. तो कोई भी कर सकता है, कोई भी सीख सकता है। इन टर्म्स ऑफ एडवाइस दैट आई वुड वांट टू गिव लाइक बडिंग बेली डांसर्स जो है, इट वुड बी टू बी डिटर्मिन्ड इन वट एवर डांस फॉर्म यूर लर्निंग। बेली डांस है तो आप थोड़ा डिटर्मिन्ड रहो और थोड़ा पेशेंट रहो, बिकॉज बहुत बारी ऐसे होता है दैट आवर स्टूडेंट्स आर आल्सो लाइक, यू नो, मैं कब उस लेवल तक का डांस कर पाऊंगा। तो इट्स अ प्रोसेस, It takes years of practice and learning. हाँ, मतलब ईयर्स मंथ्स डिपेंड्स आप कितना डिटर्मिन्ड होके कितना आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बट लाइक इट्स अ प्रोसेस एंड प्रोसेस को टाइम लगता है। तो गिव योरसेल्फ टाइम, डिमोटिवेट भी होगे विच इज ओके, बट देन कैच अप। Right. अगर वहीं पे गिव अप कर दोगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सो आई थिंक लाइक डोंट गिव अप, बी डिटर्मिन्ड एंड इट्स अ प्रोसेस, सो बी पेशेंट। So Nidhi, since I know that you teach belly dancing at Twitchcraft, so what style of belly dancing do you teach? So at Twitchcraft, we basically focus on tribal fusion style of belly dancing, Okay. which basically includes like थोड़े बहुत techniques from अलग-अलग dance forms. So we have थोड़ा popping also, we have blocking also, we have tutting. But basics जो है वो जो oriental form of belly dance है उसकी तरह ही रहता है, which is the Egyptian style जो राक्षार की है basically. Okay. उसी स्टाइल फॉर्म है, बट हम थोड़े इधर-उधर के एलिमेंट्स थोड़ा फ्यूज करके अब हमारे फॉर्म में डाल देते हैं। अच्छा। So we teach tribal fusion, but Okay. उसके साथ साथ we also teach oriental form of belly dance. So there are two styles that we teach वहाँ पे, but ज़्यादा focus is on tribal fusion. अच्छा। So Naina is like trained in tribal fusion. Okay. Who's the founder of Witchcraft. Right. So Nidhi, what are your future plans? So yeah, basically I want to like get into full time belly dancing, जो मुझे हो नहीं पा रहा है, but हर महीने सैलरी आती तो अच्छा लगता है, so I don't want to give up on that. But I think for the plan for now is I think after 3 or 4 years maybe I'll get into full time belly dancing and teaching and learning. Okay. So that's the plan for now. So right now you're teaching online only, or are you planning to teach offline as well? So we are teaching online only. Like I am teaching online, but there are classes happening offline in like Pune and all. Delhi में मैं दिल्ली से जो सिखा रही हूँ वो online सिखा रही हूँ. We Okay. have been planning कि हम कोई स्टूडियो वगैरह रेंट करके ऑफलाइन शुरू करें. मतलब देखो इंशाल्लाह कब होता है, but जल्दी होगा. So Nidhi, it was really nice talking to you. I think your story should reach as many people as possible so that you can inspire them. Thank you, Pratik. It was nice talking to you. Thank you. So I will be giving the link of Twitchcraft Instagram handle as well as her personal Instagram handle. So if anybody wants to learn belly dancing, they can connect to them directly. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर Peace. करें. और प्रतीक दुआ फोटोग्राफी को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. Thank you so much. Thank you. लिंक यहाँ आ जाएगा. नीचे आएगा, subscribe नीचे आएगा. सब्सक्राइब नीचे. Okay. ए हो गया. छुट्टी.